आज हम लोग करने वाले हैं लावा प्ले अल्ट्रा का अनबॉक्सिंग और इसका गांड फाड़ने वाले हैं भाई। इसका फुल डिटेल में रिव्यू करेंगे। उसके बाद गेमिंग करेंगे, ऐसा वैसा गेमिंग नहीं, गेमिंग के बीच में फेसबुक यूट्यूब ये सब खोल के चलाएंगे। जब तक लैग नहीं करे तब तक गांड फाड़ देंगे इसका हम लोग। हमारे पास आ चुका है अभी लावा का प्ले अल्ट्रा 5G। हम इसका अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और फुल रिव्यू करके इसका परफॉर्मेंस भी चेक करने वाले हैं, गंदा वाला। तो हम इसका चलते और चेक करते हैं कि फ़ोन के साथ में कौन सा एडवांस वर्जन दिया हुआ है। 15 अभी है और इसका भाई लुक एक नंबर वाला है। एमोलेड डिस्प्ले है, फ्लैट पैनल है और इस 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। 7.8 mm का स्लिम बॉडी है इसका और 2 कलर में अवेलेबल है। 7 लाख से इसका एंट्री स्कोर है और मीडियाटेक का 7300 भाई 7300 इसका ये UFS 3.1 है और बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। तो आप लोग 4-5 ऐप एक बार चला रहे हो साइट ओपन करके तो बिल्कुल मतलब चलेगा एक नंबर वाला। 2 साल का अपडेट है और 64 मेगापिक्सल का सोनी का कैमरा है इसका और 5 मेगापिक्सल का बैक माइक्रो लेंस है और फ्रंट का 13 मेगापिक्सल का कैमरा है। फास्ट चार्जिंग है, 83 मिनट से फुल चार्ज है भाई। यहाँ पे वीडियो आपका 4K तक प्ले हो जाएगा, 6.67 इंच का और FHD प्लस सपोर्ट करता है ये वीडियो। तो यहाँ पे आप बिल्कुल स्मूथली यहाँ पे Heads up! Enemy dropping close! Got a gun! Wipeout! Hitless mission accepted. Capturing the revival point.
takedown. Good job. Need equipment. I need equipment. I need equipment. Follow me. Capturing the target arsenal. Loot here. बताया जा रहा है कि बारात आने के बाद दूल्हा अगर आप अपनी तुझको काफी खुश हैं। 20 की उम्र से पहले ऐसा फील हो रहा है, हमेशा मेरा सपोर्ट करी है, हमेशा मम्मी के जैसा आपको मान मेरी माँ ही है ये, मेरी माँ जैसी नहीं। आज हम करने वाले पोको M7 प्लस का अनबॉक्सिंग और इसमें करेंगे हम फ्री फायर टेस्ट हर तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उसमें व्हाट्सअप खोल के गेमिंग कॉलिंग करेंगे और देखते हैं कितना प्रेशर डालने पे फ़ोन लैग करता है भी नहीं करता है। तो फ़ोन बहुत शानदार था अनबॉक्सिंग के टाइम पर हमने इसको पूरा बर्बाद कर दिया भाई, एक नंबर वाला हर प्रोसेस लिस्ट किया हमने। अनबॉक्सिंग के टाइम के लिए फ्री फायर डाउनलोड कर डाल दिया था, डाउनलोड होता है और कुछ पार्ट्स हम कट कर देते हैं ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। तो यहाँ पे हम आते हैं लॉबी में और यहाँ पे हम सब कुछ कर चुके हैं। आज हम करने वाले पोको M7 प्लस का अनबॉक्सिंग और इसमें करेंगे हम फ्री फायर टेस्ट। Enemy nearby detected. अनबॉक्सिंग के टाइम पे वो अनबॉक्सिंग चीज बनाने के बाद मैंने फ्री फायर डाउनलोड लगा के 37% था, 99% मैंने किया है चार्ज। तो अभी देखते हैं कि एक मैच में कितना परसेंट बैटरी खाएगा, तो इससे हमें मालूम हो जाएगा, अंदाजा हो जाएगा कि हाँ कितना देर तक हम खेल पाएंगे मैच। लगभग एक अंदाजे के हिसाब से एक मैच 12 से 15 मिनट होता है, तो 15 मिनट भी लेके चले तो भाई 15 मिनट में हमको जहाँ तक लग रहा है कि 2% जाना चाहिए, क्योंकि पावरफुल बैटरी है भाई इसका, सस्ता थोड़ी है। अभी हम ये चार्ज कर रहे हैं बंदे बुलाने के लिए,
भाई हम मतलब होता है ना कि आ बैल मुझे मार, सोलो की स्क्वाड भाई नुबड़े बंदे लेकिन कुछ आ रहे हैं भाई, ये मैं बोलूँगा। मैंने 2-3 दिन से नहीं खेला है ना रैंक में, तो भी सोलो की स्क्वाड लगा दी ना, तो ऐसा होता है। आप भी अगर 1-2 दिन ना खेलो, पहला मैच है सोलो की स्क्वाड लगाना, नुबड़े बंदे आते हैं, सच्ची बोल रहा हूँ। देख लेना, ट्राई करना आप लोग भी। अभी दिखते बंदे नहीं देखते भाई। और पोको का भाई जो ये है ना, पोको का अभी ये आया है ना प्लस, तो पोको का AM7 जो है उसमें भी मैंने गेमिंग किया हुआ है, उसका वीडियो मैंने बना कर रखा है बट डाला नहीं है बिकॉज मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो टेस्ट हर जय हो Good job.